अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अब 2-3 दिन से नई गेम खेले हमें। दुबई में ज़रा गलाटा वैसा है, बम पड़ते हुए वैसा, इसलिए हमने नहीं खेले। आज शुरू करेंगे खेले। अब ज़रा थोड़ा बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है यहाँ से भी। टफ गेम है, 3260 गेम्स है। 227 3271 गेम से स्टार्ट करेंगे। कितने को तक रीच होते ही देखेंगे। आप लोग पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नए हो तो चैनल को कमेंट भी करो। अमानत को दिखा। अमानत अच्छा नहीं है, बहुत फेमस नहीं है अमानत। मम्मा का नाम अमानत रखी नहीं समझे कहते। कितना गली से दी अमानत रख डालेगा, देखो तो चेंज करता। कौन है? क्या है? देखो। मैं तो क्या बना? मैं तो क्या बना? पप्पा मैं तो क्या करेंगे? बड़ा बनेगा ना स्टार। ये तो मैं बना। फेंक दे वो। कड़वा। आप एक डालेगा। हाँ बोलो। आज भी ऐसा है। पति चार्जर डाले जाने
Danny, Now, yeah. in a way, the government is saying that we are Again, we will need to put the together. are basically for very specific reasons. They will not be allowed to use them to drop bombs on Iran. They will only be used for specific defensive operations. And that means targeting Iranian missile launchers and Iranian missile depots. Now, as a former lawyer himself, he has anticipated the question about whether or not this move is legal. And the government has published a legal summary of the advice that they took to prove that this decision is a lawful one under international law. And he was very, very keen to stress that. He was also explaining what's going to happen to the 300,000... It's not just because of the scraping and bashing. I mean, that's an issue. Yeah, and Karo you. Instead, it's a deep problem that has created a deadly high-speed bus race culture. Oh my God! And these have quickly become the most dangerous road on Earth. Today, we're taking an average bus from Bangladeshi streets, counting the near misses, crashes, and just generally trying not to die.
चाय पीना बेटा पीछे अल्लाह बड़े ये देखो नहीं मैं चाय पीने अभी जाएगा इधर बड़े से देखो अप्पा मुझे क्या कहते हैं देखो ये सब ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फिश गेम it's the rarest fish बड़े बड़ा rarest fish गेम of time what time मेरे बड़ी दिक्कत है 22 million ये rarest fish ये मेरा पूरा टैंक है नहीं पेस सेकंड 60k बना था उसको देखो ना देखो पेस सेकंड 60k पेस सेकंड मैं पूरे लाइक दिस करता ऑफलाइन है वो ऑफलाइन में अर्न कर सकता है वैसे लाइक दिस करता है पूरे अब एक फिक्शन ऐसा 3k बनाते हैं पेस सेकंड 20,000 bosses, all of them racing, smashing, and generally trying, well, not to die. Look at this shit. That thing is beat to hell. It is beat to hell like this, not because it's bumping around and hitting traffic. Because these drivers literally race between locations. And at full speed, they're smashing into each other. Because there is not one inch of this pass that is not completely beat to hell. It is completely hammered. And it's not some kind of crazy Mad Max vehicle. Actually, it is. That's exactly what it is. Guys, check out this view. You've sort of got that bare-bone cockpit. Looks like a war vehicle of some kind. And then just like, that's what you're looking out on. I suppose he doesn't really need that side. Right-handed driving, right? I like this as well. Picture some guy on the inside. That first bus was a classic testament to Dakar's history. This rolling museum of dents and scratches. But for the actual mission, I need a driver with a bit more youthful aggression. I need a contender. Hi guys, here she is, the beat. Could be my life ride. She's pretty beat up, but the driver assures me he is the best in the business. However, we still have to race to get the most passengers. That's how he makes his money. That is the incentive. Alright guys, let's take a look inside this beast. What do we got? We got some solid steel boarding. We got a pretty bare bones dash going here. Gearbox, I think I can see straight to the floor. Oh yeah, there's some nice holes. That was fun. The control panel and my rigged up action camera. There is no speedo anymore, apparently. Oh, it's just like hiding behind there. Oh yeah, there's the speedo. And that's pretty much it. We got a little bit of vision, a couple of cracks, but I don't know, I'm hoping I survive. What is going on with my hair? Always so crazy nowadays. I'm gonna walk into one of these barbershops here. I'm gonna like hope that these guys don't even notice what's going on. Years ago, I was always trying to hide my hairline on camera. In fact, I even had 2 hair transplants that I paid for myself. So when Elite Hair reached out to me, volunteered to kind of like finish the job, cover up the one area that I was still super uneasy about, I jumped at the chance. Elite Hair are one of the top clinics in the entire world. They have more than 100,000 patients every single year. The process was like way smoother than I ever could imagine. All the way from the airport pickup, to the hotel they booked me in, to the surgery itself. It was like this 5-star experience. Alright, so this was my hairline before the surgery, and even before the surgery years ago, when I was like really worried about it. Right now we're cutting off some hair so you can see what it looks like now, a little bit more upfront and in detail. This is 6 months later. I don't know, I think it looks relatively natural. You can see this is where the surgery was. I don't think you can tell the difference. It kind of looks like the hair that just originally grew there, which of course is the goal. It's crazy how much confidence grows back with your hair. Like I used to think about all these different camera angles, and now I don't think about anything like that anymore. So work out for me, maybe it'll work out for you. If you've ever thought about it, why not get a free consultation? There's a link in the description below. Check it out. But it's not just about the machine, it's about the crews running them. Hi guys, we're gonna load it up. Let's
he's in their son. I have no idea what's going down. This driver has my life in his hands. It's kind of chaos. I don't know what's going down. There's a lot of banging happening on the bus. Here's what's really going on. Every bus in Bangladesh is run by a three-man crew. The driver, a hustler who sort of hangs out the side door yelling the route out and just dragging people in, and a third guy that sort of floats around, helping out, collecting money. Hi guys, it looks like we're kicking off. Not exactly sure how comfortable I should feel right now. Driver has a big ass smile on his face. Everybody else, they look kind of amused, slightly terrified despite their frequent trips. I don't know if you can hear anything. All I know is I hope I don't die right now. I certainly have no seatbelt, and we are right in the prime position. Head right through that windscreen. So in a city like this, there's a lot of traffic, so it's not too far. But at times it picks up, and you don't need too much speed, as we just saw, to like get pretty mixed up. These guys aren't just co-workers, they're a unit, a team, they're brothers. They live on the bus, they sleep together, they eat together. They live on this bus basically. Yeah, the staff, all the bus staff, they sleep at night inside the bus. Oh my god. Oh my god. And they too frequently die together. The general gist of why these guys are driving so fast is because of the competition. They're trying to get ahead. Yeah, exactly. They have to do this because they have to pay for the bus owner, they have to pay for them, and they have to pay like for fuel, so everything like a contract. Okay, so for that reason, they have to earn more money. They run 24-hour shifts together and they risk their lives every single day. This job isn't a paycheck, it's survival. Here's what's going on. Believe it or not, this chaos isn't accidental, it's by design. Bus companies pull two simple levers to create the situation. First, they don't pay normal wages. The team gets a cut of the takings. Maybe there's a tiny base pay if you're lucky, but mostly it's entirely on commission. And that means if the bus is empty, you don't earn less, you earn nothing. Oh, we need some customers. Oh, and you see it. They're taking them all. No passengers means no food for you and your family. No rent, no money to send home, nothing. How long has he been driving this for? He got license for 10 years, last 10 years ago. So he has started driving since he was 9 years old. 9 years old, 2008. What the hell? Yeah, it's normal Bangladesh. The second lever, though, is what takes it over the edge. We just smacked into another bus at like a bus stop, and at this point, that feels like almost normal. It's kind of crazy how quickly you kind of like acclimatize to this stuff. Just wild. It compounds the first lever and things just get kind of disastrous. Bus companies then release multiple buses on the same route at the same time. That's right, there's no spacing, there's no timetable, no forcing gaps like you would in the West. It's not like they're every 30 minutes. They're just kind of random, but whenever they let them go, it's 2 or 3 buses rolling out together. And because you're running the same route, at every stop, whoever arrives first is going to take everything. Not most of the passengers, but all of them. They're all going to funnel into that first bus. Once the first bus arrives, there's nothing left. The second bus maybe gets some scraps. The third bus gets nothing. Oh my god. And when your pay is already razor thin, that loss isn't abstract. That's food off your family's table. So the buses, they move faster. Alright, here we go, guys. That is the bus we're trying to get past. $16 million acres of wilderness to roam. Drivers push, they tailgate inches off bumpers or just bash into each other.
play. And they do anything to get in front and to stay in front of the pack. Oh my god. What is this? Oh my fucking god, man. That was crazy. That was, it's not gonna let us pass. Like, he is so, oh my god, it's not letting us get past. I swear to god, I thought I was gonna go straight through that window. That was wild. Hey guys, I just saw my light flash before my eyes. That was crazy. So, again, if one bus tries to pass the other one, he's literally just going to swerve in front of it. They're not going to let that happen because you're taking money, taking food out of his family's life. It's not because they love danger, it's not because they're adrenaline junkies. Although I do think that guys who tend to stay in this job kind of pick that up over time. You sort of need to. And it's become this kind of twisted version of the Formula One situation, where you have one team that's meant to sort of come together, to be united. But instead, they create direct competition between their own drivers. And it's designed to push them to the limit. And it creates that zero-sum psychology where every win your supposed teammate receives feels like death. And just like in Formula One, the resentment, it compounds. You're competing with guys just like you guys who are just as desperate. Every stop, every blocked overtake, every time another bus beats while yours goes home empty, that goes in the memory bank. And there is no way you're letting them beat you the next time. We're past. Hi guys, we made it past. We managed to cut that guy up. We're now ahead. I don't know what happens now. Maybe he tries to pass us again. But we managed to kind of cut him off on a corner. The opportunity to pass really is when you're trying to pick up a customer. Once you're on the road, I mean, you really got no shot. They'll try and cut you off. In this instance, he was able to use like a black car as like a screen. He wasn't able to get cut off because there was a car in between. So there's like tactics to this driving. Fruits category. And so Bangladesh's roads just turn into full-blown racetracks at times, buses doing incredibly dangerous maneuvers at incredibly high speeds, often at night. And it's on public roads, not a racetrack. They're in outdated 20-ton buses with bad brakes, drivers at the end of 24-hour shifts. There's no run-off zones, no yellow flag, no safety car team, just pedestrians, motorbikes, families, kids walking to school. And the results are inevitable and disastrous. I just want them back. Party. Roll up to the party, roll up.
Guys, in case you just thought this was like fun and games, I mean, obviously not that stupid. But we're just on the road, and yeah, we run into this. Like, there's real consequences here for these bastards. I mean, this thing here, we're just traveling between a couple of cities, flipped over on the side, just ahead of us. They're about to, like, haul it over, try and get it out of the way. I don't know if everyone's okay. Hopefully so, but it's no playing around. Kind of crazy. I've never seen a bus just getting flipped back over like that. It's pretty incredible what you can do with a couple of guys in a winch. Also incredible, like, how efficient this is. Like, a bus just flips over. These guys just get right on it, flip it back over, get the road moving, just like another Tuesday. No one gives a shit. This happens all the time. Man, that's one wild ride. Bro. Alright. Alright, so what happened? That young boy, it was right around 5:30 in the evening, 20 to 25 passengers in his bus. Yeah. So the driver was sleepy, feeling sleepy. So passengers told me that he let the driver know that be aware, drive like a safe, because I am seeing you that you are not feeling very good as a good driver. So he warned 2 times, and after that, within like 5 minutes, the driver made the accident. You know? Wow, so it was obvious to the passengers that he was sleepy. Yeah, he was sleeping. It was exactly when the truck crossed over the bridge to the small island in the middle of the river. The person who was sitting on my side, he suddenly fell right on top of me. 2 more people from that other side also fell over. I was kept underneath 3 different people. I kept saying, but brother, please lift me up, lift me up, lift me up, please help me. Then the one who was on my side finally pulled me up. After being pulled up, I simply couldn't figure out from where we actually got out. That is exactly why this part is broken. We all managed to get out from right here. You got out through this broken part, sir. All right, how many passengers were in the car? About 20 or 22 people. 20 or 22 people. Did anyone die? No, no one died. Super lucky. Yes. Some were injured. I saw his hand was broken. All right. He was in this hospital. After his treatment, his elder brother came. In Jethro. At Jethro Hospital. Hospital and the driver? There's no trace of the driver. The driver ran away right after the accident? The driver has left by the grace of Allah. Over there. That's crazy. He ran away. That's nuts. Yeah. Do you think this kind of thing happens all the time? Yeah, all the time. This has happened all the time in Bangladesh. It's like normal, like it seems like clockwork. They just haul it up, clear it out. Yeah, something like this. Everyone goes about their business. Man, wild, huh? It looks pretty clear, like the bus is like come along and it's just hit one of these road dividers and flipped it like a big ram. I don't imagine it was perfectly shaped like that beforehand. Sorry, should have laughed. يمتد بشكل جديد غير قانوني. ما صبرت يا गाइस, कल अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद आज ईरान ने ऐसा अटैक किया है, इतनी मिसाइल मारी है कि ये डोनाल्ड भी बैकफुट पर आ गया। ये F-15 जेट आप जो देख रहे हो ना, ये गिरा है और यूएसए वाले बोल रहे हैं हमने खुद ही गिरा दिया। और एक नई वॉर टैक्टिक की डेटा सेंटर उड़ा दो। यूएई में अमेज़न का डेटा सेंटर उड़ा दिया। टाटा खत्म, खेल खत्म। और ये गोदी मीडिया ठीक इजराइल रुकेगा नहीं और ईरान झुकेगा नहीं। और अब कोई भी न्यूज चैनल पर थूकेगा नहीं, अपना थूक क्यों वेस्ट है। और सबसे ज्यादा थू हो रही है डोनाल्ड की। इतने बम मार रहे हैं ईरान में, इतने बम मार रहे हैं कि इलाका धुआं कर दिया। हजरात और इस डायलॉग को भी पूरा करेंगे कि किसने किससे कौन सा नाच नचवाया है। सारी बातें होंगी पर वॉर सही नहीं है, बहुत नुकसान होता है ह्यूमैनिटी का। हमारे देश का क्या स्टैंड होना चाहिए और कहाँ था। और साथ ही साथ आज डॉक्टर मनमोहन सिंह और पुराने पीएम्स को सच में लोगों ने आज याद किया। सारी बातें होगी। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया।
अरे मोदी जी लोग तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या बताओ आपको। देश हित सर्वोपरि, देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हुआ? हमारी जो क्या फॉरेन नहीं, पॉलिसी है वो लोग कह रहे हैं कि वन साइडेड होती चली जा रही है, जो देश के लिए बिल्कुल क्या ठीक क्या नहीं ही है। हुआ? अरे दिखा बिल्कुल नहीं छोड़ो, कतई ठीक नहीं है। दिखा तो बुला दो, डेमोक्रेसी कहलाते हैं। दिखा तो बुला दो, क्या दिखा नहीं? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है और हम न जाने किस तरफ देख रहे हैं। अरे देखी तो ये लोग क्यों वोट फॉर जीरो वोट ने उसको क्या की करेंगे का डाउट आता है। सारी बातें करेंगे। फिलहाल तो मोदी मीडिया ठीक ठीक। अरे चैनल का नाम आज तक नहीं, युद्ध तक रख देना चाहिए। उन लोगों की मेंटल हेल्थ का सोचो यार, हर 5 सेकंड में ऐसा करते हैं कहते वाला का। मतलब मोदी मीडिया युद्ध का दंगा नाच नाच रहा था सिर्फ टीआरपी के लिए। जहाँ एक्शन वॉर हो रही है वहाँ का सारण सुनो। In Abu Dhabi with the alarms going off here. ऐसा बुलाया और ये सब आज से बोलो सारे टीम देख ली होगी अब तक तो, लेकिन ये कमाल की चीज लाया हो, देखो इसके कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। दलाल दलाल दलाल, वीडियो पूरी दलाल। एक और अंजना के चैनल की अलग ही दुनिया है। सबसे थर्ड क्लास चैनल। और कुछ लोग ऐसे ले रहे थे, अच्छा तो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। उधर चिथड़ा ईरान को इराक लिख रही है और पागल बिल्ले के चैनल को भगाया जा रहा है। Okay, tempers running high. Zenith, I would request you to come out of that area. और ये सारी बातें हमको एक बात सिखाती है कि इस दुनिया में पावर की रिस्पेक्ट होती है। तो इन शॉर्ट आगे वही बढ़ेगा, मजबूत वही होगा जो रिसर्च करेगा, नई टेक्निक यूज करेगा, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा। और एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम सबको सीखनी चाहिए। अब तो नॉर्मल हो गया, कई सारे बिजनेस एआई यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज कर रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब एआई एक ऑप्शन नहीं, एक कंपलसरी थिंग बन गया है। एंड यू नीड टू लर्न इट मोर एंड मोर, एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। सैटरडे संडे के बीच 10 बजे से 7 बजे तक 2 दिन की एआई लाइव ट्रेनिंग हो रही है जो वर्थ है 10,000। लेकिन हमारे पार्टनर आउटस्किल्स इसे आपके लिए फ्री में लेकर आए। 16 घंटे की वर्कशॉप में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अपनी एक एआई पर्सनल टूल किट कैसे बनाना है, एक रिपीटेटिव टास्क को किस तरह ऑटोमेट करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, ऑडियो और वीडियो कैसे जनरेट करना गुड क्वालिटी, साथ ही साथ एआई एजेंट को कैसे डेवलप करना, ये सारी चीजें आप इस वर्कशॉप में सीखोगे। अब तक 1 करोड़ प्रोफेशनल्स अटेंड कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और एआई को और अच्छे से समझने के लिए यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मैंने कहा कि ये बिल्कुल फ्री है, गो एंड ग्रैब इट। मतलब गोदी मीडिया पे वॉर फोन चल रही है और मोदी जी को कोई लेना देना ही नहीं, वो यहाँ घूम रहे। अब आप समझ लो इन्होंने ब्लू एप्रन क्यों पहना है सब व्हाइट एप्रन के बीच। चिक राजा बाबू, फोटो अच्छी आनी चाहिए। ब्लू पहनूंगा, सब में उभर के दिखूंगा, बैकग्राउंड में मिलना नहीं है मुझे अच्छा दिखना है, सब में रील अच्छी आनी चाहिए, समझे। अरे दुनिया में तबाही मच रही है, हर तीसरे मिनट में अंजना वर्ल्ड वॉर 3 करवा रही है, लेकिन तबाही को छोड़ के वो तमिलनाडु में घूम रहे। पूछो क्यों? वो इलेक्शन, वहां पर नेता अपना काम बताते हैं, विजन बताते हैं, जब इलेक्शन होने वाले हैं मोदी जी क्या दिखा रहे। अरे बस कर जाओ मोदी जी, पब्लिक के साथ साथ प्रभु भी जानते हैं कि आपके मन में प्रभु नहीं पिक्चर चल रही है कि कौन सा कैमरा एंगल सही आ रहा होगा इस टाइम मेरा, क्योंकि बहुत सारे हैं। और ये कैसा दंडवत प्रणाम है, रेड कारपेट के ऊपर व्हाइट कपड़ा। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए। अरे चलो ये सब हो गया, रात के 10 बज गए, पूरी दुनिया वेट कर रही है कि मोदी जी अयातुल्लाह खमानी साहब के बारे में एक ट्वीट करेंगे, शोक प्रकट करेंगे। चलो कड़ी निंदा ना करो, शोक तो प्रकट करो। ईरान बहुत पुराना और मजबूत अलाय रहा है हमारा। Our doorstay is as old as history. और ये नेशनल इंटरेस्ट में बोल रहा हूँ मैं। पाकिस्तान से लड़ने में ईरान हमारे साथ होता था, जाबाज तोड़ दिया है, एनर्जी सिक्योरिटी दी है। और ये देख रहे हो अभी इतनी सी जगह है, 33 किलोमीटर वाइड, स्टेट ऑफ हार्मोज। यहाँ से हमारा 85% ऑयल आता है। कल को डोनाल्ड ने बंद कर दिया तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा गया। मीटिंग याहू ने फोन पर बात कर ली। हेलो बाबू, अरे अभी तो मिल के आए थे,
ये ईरान पर अटैक करने के 2 दिन पहले के विजुअल से कैन यू बिलीव दैट? अरे दुनिया भर के साथ साथ देश के डिफेंस एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कैसी टाइमिंग थी मोदी जी, एकदम मन
पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। इस तेज से जुड़ी खबरों ने दुनिया भर की चिंताओं में डालना शुरू कर दिया। जनवरी 2025 के बाद तेज के दामों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। $1 के सारा का हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आराम सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है, जिसने राज कटोरा रिफाइनरी पर हमले के बाद ऑपरेशन रोक दिए। जो वीडियो है भयावह, जान के जोर में रिफाइनरी में खाना नुकसान, सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक घोटाला चालू सामने जाओ। सोशल मीडिया पर हमले की वीडियो वायरल है। इसका मतलब है इस्राइल में भी घबराहट है कि ईरान इस बार बड़ी तबाही मचाने वाला है। ओमान के तट के पास ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें 5 नागरिक के मारे जाने की खबर है। ईरान का 5 शहर को इजराइल से हमला। अभी तक जो भी समझा जा रहा था कि एक सरकारी ईरान ने खाड़ी के देशों की रिफाइनरीज को टारगेट कर सबको सौंपा है। कच्चे तेल और प्रोड्यूस की बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कौन सा मोड़ है जो कोई नहीं जानता है। नेशनल सिक्योरिटी से गूगल इन सर्वर बीमारी कभी बता कर नहीं आती। बीमारी के बाद खर्चा देने या ऐसी सोचने से बेहतर है कि पहले से इंश्योरेंस के बारे में सही जानकारी और आप अपना इलाज बेफिक्र होकर करवा पाएं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। ये भी एक तरह की बचत है। कई स्नान पहले थायराइड, टीबी, अस्थमा जैसे एक्जिस्टिंग डिजीजेस को कवर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस के लिए सही समझ होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं, उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है, और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म इंश्योरेंस देना पड़ता है कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को पैसे की कोई दिक्कत ना हो। कौन सा प्लान सही है या खरीदने से पहले सारी टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। 4 से 5 रुपए महीने की छोटी सी रकम देकर आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में लाखों करोड़ का कवर ले सकते हैं। इसमें क्लेम्स है, इसलिए आपको और जानकारी दे सकते हैं। और लेकिन बाद में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि वैसे सिस्टम ने इन विमानों को मार गिरा है। एक विमान 880 करोड़ के आसपास का है, और ऐसे 3 विमान आज क्रैश हो गए। कोई पायलट हताहत नहीं हुआ। पैराशूट की मदद से सभी सुरक्षित जमीन पर लौट आए हैं, ऐसा दावा किया गया। कुवैत ने ही अमेरिका के 3 विमानों को मार गिराया, और अमेरिका इसे फ्रेंडली पॉइंट बता रहा। इस घटना से पता चलता है कि ईरान के कारण कुवैत में भगदड़ मची। इन्हें पता नहीं चल रहा किसकी मिसाइल आ रही है, किसका विमान जा रहा है। विमान देखते हैं, लीवर दबा देते हैं। युद्ध में ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी तैयारी से लड़े जा रहे युद्ध में कई विमान खुद से नष्ट कर